Hello and welcome to Money Mindset Mastery with Vikas Joshi, Lab 2, Beyond Passbook Balance, friends. In this series, we go beyond the numbers in your passbook to unlock the real drivers of lasting wealth, your mindset, habits, and decisions. It's not just about earning or saving anymore, but thinking like an investor in every area of life. Whether you are a beginner or looking to level up, each episode will guide you to master the inner game of money and create a financially empowered future for you. नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी माइंडसेट मास्टरी विथ विकास जोशी, लैब 2, पासबुक बैलेंस से परे। यहां हम बात करते हैं असली दौलत की, जो सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि आपकी सोच, आदतों और फैसलों में छुपी होती है। हम सीखेंगे कैसे हर क्षेत्र में एक निवेशक की तरह सोचना आपको आर्थिक रूप से सशक्त बना सकता है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने भीतर के इन्वेस्टर को जगाने के लिए। So before we start with today's episode, friends, I appeal to all of you, if you like this series, love this series, please like, share and subscribe as it motivates me to create more of such content. So let's begin. Today's topic is how to think like an investor even without stocks. अभी तक दिमाग में इन्वेस्टर बोले तो हम स्टॉक इन्वेस्ट करें तभी इन्वेस्टर, नहीं, ये हमारी सोच है कि इन्वेस्टर बोले मतलब ही इज ऑल्सो ट्रेडिंग, ही इज ऑल्सो वर्किंग ऑन हिज शेयर स्टॉक्स मार्केट एंड ऑल दोस थिंग्स. No, not at all. What you have to think of is think in terms of ROI. What do you mean by ROI? Return on intention. Don't go by the common parlance, return on investments or return of rate of interest. No, this is the return on intention. What is your intention and what returns you require? That is what we are talking of. So most of you are familiar with the term return on investment. But today I want you to think about return on intention. Ask yourself, is this activity or habit helping me move towards the life I want or forward in my life as I want? That is what you have to ask. Because if you are spending 2 hours a day scrolling social media without direction, ask, is this returning anything to me, for any meaningful thing to me? Compare that to spending 30 minutes learning or editing videos or whatever you love for which takes you forward in your goals. Now you are building a skill that could generate an income. Always think, does this bring a value to my future? ला रहा है कि कुछ मेरा फ्यूचर संवारेगा क्या? अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने इस बारे में सोचा ही नहीं है. You see, we were blindly following the things as were told by our seniors or experienced people. But now we have to act smart. We have to think of every minute that you are spending because it's your life. You have to be aware because the minute spent is not going to come back. So you have to spend it wisely. And nothing is more wiser than you earn the interest on your intentions. You earn the return on your intentions. So the delay gratification intelligently. Investors are long-term thinkers. They choose temporary discomfort for future freedom. So that is what I mean to say by an investor. They are long-term thinkers. Short term नहीं, अभी डाला तो कल मुझे इतना चाहिए, नहीं. We are always on the base of long term so that we have a good secured future. So when you resist short term spending, like buying that flashy gadget or eating out every weekend, ये तो हमारा कॉमन है ना. चलो एक पार्टी करते हैं, तो ये अगर आप कम करोगे and instead put that money into learning a high income skill, you are planting the seeds. किसके लिए? आपके फ्यूचर के लिए. This doesn't mean you don't enjoy life. No, don't take it in that way. I don't mean to say that you should not enjoy the life because the enjoyment is a necessity part of life.
It means that you enjoy with strategy. Have a strategy in place, have the plan in place. कब जाना है तय होना चाहिए. Spur of the moment. No, no. That is what I call mindless spending. No, no, don't do that. Because if you invest that, that is securing your future. So, one simple rule is if the pleasure disappears in a day, but the cost continues for months, it is not a smart investment. So, that is what I mean to say by think like an investor. आनंद अगर कुछ क्षणों में ही चला गया तो इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट. वो कंटिन्यूस मिलना चाहिए ना. तो वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, वो तात्काल इन्वेस्टमेंट हो गई. सो बिल्ड और बाय एसेट्स, tangible or intangible. So thinking like an investor means looking at what you own and asking, is this building me up or pulling me down? ये सवाल अगर अपने आप से पूछोगे तो जवाब जो मिलेगा, that is what you wish you should be. Time spent in learning, networking with positive people or exercising, these are intangible assets. दिखाई नहीं देते लेकिन assets है. एक्सरसाइज करोगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो पैसा बचेगा, बिकॉज मेडिकल एक्सपेंसेस खर्चा कम हो गया. दैट यू कैन इन्वेस्ट फॉर योर सिक्योर फ्यूचर. सो बाइंग टूल्स और इक्विपमेंट और सर्विसेज दैट इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी. आजकल तो बहुत सारे अवेलेबल है टूल्स. सो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ बाइंग दोस थिंग्स सो दैट यू एनहांस योरसेल्फ, so that you are securing your future. So the tangible assets, whatever is increasing your productivity. So even your habits are assets or liabilities. वैसे ही होगा ना, अगर हैबिट लायबिलिटी का एसेट है, खर्चा करते रहोगे, लायबिलिटी है. रिटर्न तो आ नहीं रहा है कुछ, ना तो इंटेंशन में मिल रहा है, ना फ्यूचर सिक्योर हो रहा है. सो यू हैव टू learn to ask such type of questions to yourself. Watching inspiring content, that is a mental asset. Complaining and gossip, emotional liability, ये ज्यादातर हमारा समय इसी में जाता है. Hence I say these are emotional fools. Why? Because they are losing their future at the cost of their spur of the moment or spur of the emotions. समय तो चला गया, सिक्योर कब करोगे अपना फ्यूचर? सोचा ही नहीं. That is what I call emotional fools. So that is emotional liability. Begin auditing your lifestyle the way an investor audits पोर्टफोलियो. ऐसा उसका जो भी पोर्टफोलियो वो कैसे ऑडिट करेगा? अगर इन्वेस्टमेंट ने अपना पैसा डाला है तो ही मस्ट बी कीपिंग द रिकॉर्ड्स. सो द रिकॉर्ड्स ही इज कीपिंग, he is analyzing everything on daily basis. That is what you should do in your life also. So create a cash flow, not just savings. हमें आदत हो गई है, जमा पूंजी मतलब सेविंग, सेविंग मतलब बैंक. नहीं नहीं, उतना नहीं है. इन्वेस्टर मतलब सिर्फ सेविंग नहीं है. दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. द इन्वेस्टर माइंडसेट इज नॉट अबाउट होल्डिंग, इट्स अबाउट द फ्लो. Hence I say accumulation and investment is different. So wealthy people don't focus on cutting coffee. नहीं नहीं, चाय का खर्चा कम करेंगे, अरे नहीं नहीं, वो करो. They focus on expanding the income. इनकम सोर्स कैसे आप बढ़ाओगे, ये भी तो सोचो. ये चाय पे चर्चा में भी हो सकता है. और ये that is also diplomacy in many of the things. Marketing people do all these things always, but now you have to apply in your daily life. You don't need to a fancy job to start for. You need creativity. Can you convert a hobby into a service? Yes, you can. You have to have that thought process in mind. Can you teach something online, या फ्रीलांस कर रहे हो, कंसल्टेंसी कर रहे हो, और या affiliate to some market trend में कर रहे हो. Now this will help you to grow. Time invested in income generating skills is the new compounding. Multiple हो रहा है.
आजकल तो ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल रहा है, सो यू कैन ऑलवेज ट्राई दैट. Even if you are retired or semi-retired, your wisdom is monetizable. Think beyond the bank balance, friends. Think in terms of daily cash flow and growth potential. That is what is going to help you to secure your future. Think long term, act short term. आपकी सोच लंबे के लिए होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत तो आज से ही करनी चाहिए. So every great investor sees the long game but acts in the short term. You may want financial freedom in 5 years, मान लो, but you invest 30 minutes today in learning, refining, creating, or building your future. That's the investor's secret. Small intelligent actions कंपाउंड डेली बेसिस पे करोगे, कंसिस्टेंसी रखोगे तो आप बढ़ने ही वाले हो, आपका फ्यूचर सिक्योर होने ही वाला है. फोकस ऑन द प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन. कई बार मैंने देखा है लोग परफेक्शन के पीछे इतने पड़े रहते हैं कि अपना सारा समय परफेक्शन होने में डाल देते हैं. इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी. यू चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस गोज ऑन. चलते चलते जो भी चूक रहा है, गलतियां हो रही है या जो सुधारना चाहते हो सुधारते चले जाओ. रुके रहोगे मैं पूरा परफेक्ट ही होऊंगा तभी मैं करूंगा, तब तो आप समय भी गंवा रहे हो, आपका फ्यूचर भी सिक्योर नहीं हो रहा है. So you don't need a lakh to invest. You need a habit. Read, reflect, refine, and act every day. Now these things you can apply in your daily life also. Now you are a homemaker. You can also improve yourself in digital literacy. समय जो मिला है आपको, तो यू एनहांस योर नॉलेज इन डिजिटल. नाउअडेज वो रिक्वायरमेंट है. डिजिटल लिटरेसी में आपका एनहांसमेंट होना, आपका पूरा ज्ञान होना वो जरूरी हो गया है. सो आजकल तो फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है. यू कैन अफोर्ड, यू कैन गो इन फॉर द पेड कोर्सेज ऑल्सो. वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कई प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जो सिखाते हैं. नाउ दैट इज इन्वेस्टिंग. तो ये इन्वेस्टिंग कैसे हो गया? बिकॉज द प्रोसेस यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड, नाउ यू आर गेनिंग सम नॉलेज विच यू कैन यूटिलाइज फॉर टीचिंग अदर्स. अगेन जनरेट द इनकम, बिकॉज नाउ यू आर इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग. कुछ साल बाद आप मास्टर भी बन जाओगे, सो यू कैन नाउ टीच अदर पीपल, impart the training to others. You can take the cost. So that is how you are developing yourself. So retired अगर हो चुके हो, you have got the experience, so invest that experience into mentoring the youth. जो नई पीढ़ी है उनको सिखाओ. Creating a YouTube channel कर सकते हो. Writing your experience is one of the things that you can go in for. This will build intellectual and legacy capital. Even your kitchen garden is an investment in health and savings, है ना? ये कभी देखा नहीं था. क्यों? क्योंकि उस तरह से सोचा ही नहीं था. Because you might not see the money immediately, but the value shows up in well-being, the confidence, the purpose, and the peace of mind. ये तो है ना, घर घर की बात है ये तो. लेकिन हम इस बात, इन चीजों में हम कभी देखते ही नहीं है. मैं हमेशा कहता हूं कि घर में खाना बना है, लेकिन एट द स्पर ऑफ द मोमेंट मुझे लगा मुझे आज मेरा मन नहीं करता है तो मैं बाहर जाके खाना खा के आऊं. घर का खाना मैंने फेंक दिया. व्हाट आर यू डूइंग? इन अदर वे यू आर स्पेंडिंग योर मनी ऑन द थिंग्स विच यू हैव सेव्ड फॉर. घर में खाना था वो फेंक दिया, बाहर जाके खा के आगे पेड किया. सो द एक्सपेंसेस वर मेड फॉर अ जॉय ऑफ a certain moment which didn't even last for the full day. है ना? ये तो आदत है हमारी, सब घर घर की बात है. खाना खाते हैं फिर बोलते हैं नहीं वो अच्छा नहीं था, दाल अच्छी नहीं थी, क्या क्या नहीं था अच्छा. We are always on that nana mode. After paying for that, that is what you have to understand. If it is not giving you the joy, why expand? So investors don't grow money, they grow the value. So you have to create your value. और आप हमेशा देखोगे
The people who are so disciplined are the successful, and they have secured their future more than the people who are working at the spur of the instance of the moment. So thinking like an investor is not intended to stock portfolios. नहीं नहीं, वो सिर्फ उतना नहीं है. It is not limited to that. It is about asking the right questions. Is this building me up or draining me? ये सोचना चाहिए. जैसे मैंने अभी कहा, अगर खर्चा कर रहे हो तो वो ड्रेन आउट हो गया, सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ जो अच्छा नहीं था उसके बारे में ये बात करते निकले हम. वो टेस्ट अच्छा नहीं था, समथिंग वाज नॉट गुड, द एम्बियंस वाज नॉट गुड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो विल दिस क्रिएट वैल्यू इन फ्यूचर? नो. तो ऐसे क्यों करना है? Am I planting seeds daily? ये सवाल पूछने अपने आप को. Whether I'm working towards my goals on daily basis, then you will get the answers, friends. In the money mindset mastery journey, we go beyond financial transactions. We aim to transform how you relate to money, time, and self-worth. Self-worth is important. You need more clarity, more discipline, and vision. Once you adopt this mindset, everything changes, friends. How you spend your time, who you listen to, what you consume, and most importantly, what you believe is possible for your future. So, should I say that they take this challenge for you for the next 7 days? Before you spend your time or money, pause and ask yourself, is this an expense or an investment? बस इतना ही सवाल पूछ लीजिए. ये एक्सपेंस है मेरे लिए कि इन्वेस्टमेंट है? तो इस सवाल का जो जवाब आपको मिलेगा, दैट इज व्हाट योर फ्यूचर इज. स्टार्ट लिविंग लाइक एन इन्वेस्टर एंड यू विल naturally start attracting wealth, both financial and spiritual. So friends, I sign off on this note, and we meet again in another episode, Money Mindset Master with Vikas Joshi, Lab 2, Beyond Passbook Balance. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.